Hello everyone, welcome to the Gurukul. In this video lesson, we are going to learn the fundamental unit of life, cell. ये लेसन वेरी इंपॉर्टेंट है जो 9th स्टैंडर्ड में उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही. इसके अलावा ये लेसन इम्पॉर्टेंट है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी साइंस फॉर केवीएस और एनबीएस. सो एनबीएस की अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाली है और नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है. तो जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा आपको मैं इन्फॉर्म करूँगी. आप बिल्कुल टाइम से फॉर्म भर लें और इसके टीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगी. तो अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है और आप टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे टीजीटी साइंस की हर एक टॉपिक का तो यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक के जितने भी लेसन हैं वो आपको पढ़ने हैं साइंस के एनसीईआरटी के. तो यहाँ मैं वन बाय वन जो समरी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगी. तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं केवीएस के लिए तो केवीएस के का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है नई वैकेंसीज के लिए. तो आप इस तरह से प्रिपेयर करते रहिए. और अभी जो है एनवीएस के लिए हम ये कर रहे हैं लेसन को. तो चलिए जल्दी से लेसन को शुरू करते हैं. तो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ चैप्टर 5 है ये क्लास 9th का ये एनसीईआरटी का लेसन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो दो तरह के होते हैं. वन इज यूनिसेलर, अनदर वन इज मल्टीसेलर. सो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होता है. सो यूनिसेलर की बात करेंगे तो दैट इज लाइक उनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी होती है. जैसे कि एग्जाम्पल इसका है अमीबा, पैरामीशियम. और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसकी पूरी बॉडी जो होती है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है. जैसे कि एक इंसान है या फिर काऊ है या फिर डॉग है और इंसेक्ट. तो ये सारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. नेक्स्ट है सेल. सेल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि सेल क्या चीज़ है. तो सेल जो होता है सेल के जो पार्ट्स हैं पार्ट ऑफ द सेल जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसे हम जान लेते हैं. तो यहाँ पे सारे पार्ट्स को जानने के लिए पहले इम्पोर्टेंट है सेल वॉल. सो सेल वॉल क्या है. तो सेल वॉल जो होता है दिस इज ओनली प्रेजेंट ऑन द प्लांट सेल. ओनली इन प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो होता है दोनों में प्रेजेंट होता है यानी कि प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी. अनदर इज साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनेल्स आते हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. बट नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियस. सो अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है. और अगर यूकैरियोट की सेल की बात करें देन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. तो साइटोप्लाज्म में फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट इज लाइसोसोम. अनदर वन इज वैक्यूल, गोल्गी apparatus, mitochondria, plastids which is present in plant cell. देन इज सेंट्रियोल्स इन एनिमल सेल. तो यहाँ पे जो हमें की पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं दैट आर डिस्कवरी ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल, ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. So let us discuss prokaryotes and eukaryotes. The plant cell and animal cells shape. Cell size, cell membrane, cell wall, diffusion, osmosis ये सारे टॉपिक्स हमको इसके अंदर पढ़ने हैं. न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम. So basically in प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इसमें हम वैक्यूल्स होते हैं और जो कि एब्जॉर्ब कर सकते हैं लिक्विड को और वो क्रिएट करते हैं फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज. जो सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल होता है विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल बट विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. सो न्यूक्लियस यूकैरियोटिक साइज. तो यहाँ जो न्यूक्लियस जो होती है प्लांट सेल हो या एनिमल सेल उनकी न्यूक्लियस जो होती है यूकैरियोटिक साइज की होती है. नेक्स्ट एनिमल सेल. एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल्स क्योंकि एनिमल सेल में होता है सेलुलोज नहीं प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई सेल वॉल इज एब्सेंट. और वैक्यूल्स नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो छोटे होते हैं. यहाँ पे वैक्यूल्स जैसे बड़े वैक्यूल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे वैक्यूल्स नहीं होते, छोटे वैक्यूल्स होते हैं. एंड वैक्यूल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होते लिक्विड को बिकॉज इट हैज़ नो सेलुलोज कैन फॉर्म अ वैरायटी ऑफ शेप्स. हैव लाइसोसोम. यहाँ पे लाइसोसोम नहीं होता, यहाँ पे लाइसोसोम होता है. अ प्लांट सेल विथ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन पिगमेंट एंड रेड ब्लड सेल. So next, all living forms are composed of microscopic unit called cells. So a cell is basic structural and functional unit of life forms. So एक cell जो होता है वो basic structural and functional unit of life होता है. And study of structure and composition of cell is called the cytology. Cell was first observed by Robert Hooke in dead cork slice in the year 1665.
पहली बार सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक डेड कॉक स्लाइस यानी कि वुडन की एक कॉक थी स्लाइस, जिस पर उन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था। और उन्होंने जो फर्स्ट लिविंग सेल जो है, फर्स्ट लिविंग सेल्स को कंपोज किया गया था माइक्रोस्कोपिक यूनिट दैट इज कॉल्ड, जिसे कहा जाता है ऑल लिविंग फॉर्म्स कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक that are called cells. अब यहाँ पे the basic structure and function unit of life forms that is called the cell. अभी यहाँ पे देख लेते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी बेसिकली जो सेल की स्टडी होती है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे सेल जो होता है फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने पहली बार से ऑब्जर्व किया था एक डेड कॉर्क स्लाइस में, और ये किया था उन्होंने 1665 में। फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था A.V. लीवेनहुक के द्वारा। सो लीवेनहुक, ये नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था सेल को। नेक्स्ट, इफ its consistency differs under different conditions, और different conditions और जितने different it exists in solution और gel, ये सारे अलग अलग मीडियम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो अलग डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होती है। नेक्स्ट, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, इट इज कंसिस्टेंसी डिफरेंस अंडर डिफरेंट कंडीशन, इट कंसिस्ट solution or gel states. Protoplasm is an aggregate of various chemicals such as water, iron, salts, other organic molecules like protein, carbohydrates, fats, nucleic acid, vitamins, etc. Now cell theory. Cell theory, two biologists, Skaldian and Scaven, gave the cell theory which states that all plants and animals are composed of cell. Cell is the basic unit of life. All cells arise from pre-existing cells. So viruses are exceptions of cell theory. Next, move to the types of cells and their organisms. तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के सेल्स और ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो कि एक ही सेल से उनकी पूरी बॉडी बनी होती है, दैट आर यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल्स हैं, पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, दैट आर दे आर प्रोकैरियोट। सो यहाँ पर ज्यादातर जो होते हैं ये प्रोकैरियोट होते हैं। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जब बात करेंगे तो ऑस्ट्रिच, पाइन ट्री, these all are multicellular organisms and these are eukaryotic. Now, on the basis of number of cells, अब नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे अगर बात कर रहे हैं, यूनिसेलर और मल्टीसेलर का टर्म दे रहे हैं, देन सेल मेम्ब्रेन, दैट इज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होता है और लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं मल्टीसेलर में। अगेन फंक्शन, ऑल फंक्शंस आर प्रिपेयर्ड और परफॉर्म बाय द सिंगल सेल ओनली। तो एक सिंगल सेल के अंदर सारे फंक्शंस हो जाते हैं पूरे बॉडी के, और यहाँ पर डिफरेंट सेल्स जो होते हैं परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। डिवीजन ऑफ लेबर नॉट परफॉर्म्ड and cell specified or perform of different functions. So reproduction involves in the same single cell or specialized cell germ cells like take part in reproduction. So life spans short होती है यूनिसेलर की और मल्टीसेलर की लॉन्ग होती है। So on the basis of organization, अगर organization की बेसिस पे बात करते हैं then it is of two types, prokaryotic and eukaryotic. So prokaryotic basically कहा जाता है very minute in size और fairly large in size. So nuclear region, nucleotide not surrounded by the nuclear membrane. So nuclear material surrounded by the nuclear membrane. और यहाँ पर क्या होता है प्रोकैरियोटिक में कि सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और यहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, सेल डिवीजन बाय द फीजन और बडिंग, नो माइटोसिस। माइटोसिस यहाँ पे नहीं होता है। सेल डिवीजन जो होता है या फीजन से हो जाता है या फिर बडिंग से हो जाता है, जैसे कि फीजन से होता है अमीबा में एंड बडिंग से होता है हाइड्रा में। सेल डिवीजन जो होता है वो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। नेक्स्ट, लुक एट द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये प्लांट सेल का और यहाँ ये जो है ये एनिमल सेल का। सो अगर शेप की बात करें, सेल्स आर ऑफ वेरिएबल
shapes and size, their shape is according to the function. अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग शेप और साइज के सेल होते हैं. जनरली जो शेप होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, बट दे मे बी elongated. नर्व सेल्स जो होते हैं वो elongated होते हैं, और समटाइम्स इट इज ब्रांच. लाइक अगर बात करेंगे नर्व सेल की, वो ब्रांच भी होते हैं. और आरबीसी की बात करेंगे, डिस्कॉइडल होता है. और यहाँ पर जो मसल सेल होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं. तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अलग अलग शेप के अलग अलग सेल्स की पिक्चर को. और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के नर्व सेल जो होते हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि ब्रांच्ड है और एलोंगेटेड है. और अगेन यहाँ पे ओवम है और ये स्पर्म है. अगेन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टमक सेल, तो ये कॉलमनर सेल्स होते हैं. और यहाँ पे एपिथेलियम फ्रॉम द ट्रैकिया. नेक्स्ट आ जाते हैं अभी सेल साइज. तो साइज ऑफ द सेल वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. सम माइक्रोस्कोपिक while some are visible with naked eyes. Their size may be 0.2 to 18 centimeter तक होता है. और साइज ऑफ टिपिकल सेल इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रेंजेस 20 to 30 mm तक होता है. एंड द लार्जेस्ट सेल, सबसे ज्यादा बड़ा सेल जो है अब तक का, द सेल ऑफ ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग, जिसकी जो डायमीटर होती है 15 सेंटीमीटर होती है और 8 सेंटीमीटर डायमीटर विदाउट सेल. नो लॉन्गेस्ट सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल. सो नर्व सेल सबसे लंबा सेल होता है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर या इससे भी ज्यादा. स्मॉलेस्ट सेल सबसे ज्यादा होता है, जैसे नोन एज पीपीएलओज. सो जैसे कि माइक्रोप्लाज्मा, जिसकी डायमीटर होती है 0.1 mm. ह्यूमन एग जो होती है, इसकी लेंथ, इसकी जो डायमीटर होती है 0.1 mm होती है. और कंपोनेंट ऑफ सेल की बात कर लेते हैं. सो बहुत इसकी ऑकरेंस जो होती है, ऑकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल, एज दे all got certain specific components like cell organelles. Each of them performs specific function. The three basic components of all the cells are plasma membrane, nucleus and cytoplasm. तो यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके सेल ऑर्गेनल्स को. तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन है. These are called polysaccharides chain. ये जो चेन देख रहे हैं हाइड्रोफोबियोटेल्स इसे कहा जाता है, और ये हाइड्रोफिलिक हेड्स है. रिकॉग्निशन प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स. So this is the plasma membrane. ये जो structure है plasma membrane की है. Now come to the cell membrane. Cell membrane is also called the plasma membrane or plasma lemma. So it is the limiting boundary of each cell which separates the cytoplasm from its surrounding, and it is found in both plant as well as animal cell. So it is outermost covering of a cell in case of animals and lies below the cell wall in case of plants. It is made up of proteins and lipids, where proteins are sandwiched. तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स और लिपिड जो होते हैं, लेयर किस तरह से होती है, जैसे कि सैंडविच में आप ऊपर नीचे ब्रेड होती है और बीच में फिलिंग होती है, जस्ट लाइक दैट ये प्रोटीन और लिपिड की लेयर से बनी होती है. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो क्या है, ये प्रोटीन है और यहाँ पे प्रोटीन की लेयर है और बीच में लिपिड की लेयर होती है. ठीक है. नेक्स्ट है between the bilayer of lipids. So lipid की दो लेयर के बीच में प्रोटीन की लेयर होती है. सॉरी. Now plasma membrane is selectively permeable in nature. It allows or permits the entry and exit of some material and in and out of the cell. That because of this reason, this is called the selectively permeable in nature. Next, Singer and Nicholson have the fluid mosaic model of plasma membrane. According to them, it consists a protein layer sandwiched between two layers of lipid. So it is quasi-fluid state, that is 75 angstrom thick. So it is flexible and can be folded, broken and reunited. So ये जो होता है, जस्ट दो लेयर होती है लिपिड की, उसके बीच में एक प्रोटीन की लेयर होती है. ना फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, देन इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड and outside the cell. It helps them in maintaining the distinct composition of the cell. Now, transportation of molecules across the plasma membrane, so it can be done by the following ways. पहला होता है diffusion, then होता है osmosis. तो diffusion क्या होता है? ये solvent और solid particles जो होते हैं वो move हो सकते हैं, equalize concentration, no semi-permeable membrane involved. यहाँ पर जो होता है, जो particles होते हैं वो move कर सकते हैं बराबर से
एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी कि अंदर से बाहर, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। और नेक्स्ट है इक्वलाइजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू सॉल्यूशन। अगर सपोज कीजिए आपने एक सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर एक शुगर सॉल्यूशन में एक सेल को डाला हुआ है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी अगर वहां पर बाहर की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर सॉल्वेंट एंड सॉलिड पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। और नेक्स्ट अगर इक्वलाइज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू सॉल्यूशन, देन यहाँ पर सेल में कोई चेंजेस शेप में नहीं होता है। अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट मूव, द मूवमेंट इज थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स और आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन. It does not require energy, therefore it is called the passive transport. Osmosis, so that the movement of solvent or water from higher concentration solvent to lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. Or the movement of solvent or water from the lower concentration to higher concentration of solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. So osmosis can also be as diffusion of solvents. Now, endomos endomosis. So endomosis, movement of solvent into the cell is called endomosis. Now exomosis, so movement of solvent outside the cell is called exomosis. Types of solution on the basis of concentration. So concentration यहाँ पर that is hypertonic, isotonic और hypotonic. So यहाँ पर अगर आइसोटोनिक की बात कर लेते हैं फर्स्ट की, then when concentration of the solution outside the cell is equal to the concentration of cytoplasm of the cell is called isotonic solution. तो अगर सपोज करते हैं यहाँ पे जो आउटसाइड ऑफ द सेल की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वो बिल्कुल बराबर है इनसाइड ऑफ द सेल की, देन इट इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल मोर, अब यहाँ पर अगर बाहर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ड्यू टू दिस क्या होता है, सेल लूजेस वाटर एंड बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड. तो ऐसे केस में इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, बिकॉज अंदर में जो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन है, जो बाहर की सॉल्यूशन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो ये वाटर लूज करने लग जाता है. नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड ऑफ द सेल वहाँ पे कम होती है, तो ऐसे में ये स्वेल हो जाता है. जैसे कि आपने अगर एग्जांपल देखा हो कि आप चने होते हैं या फिर मटर होता है, आप उसे रात में पानी में डाल देते हैं, क्योंकि सेमी परमेबल इसका भी मेम्ब्रेन होता है. देन क्या होता है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर ये स्वेल हो जाता है, ये फूल जाता है, क्योंकि ये बाहर के पानी को अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है, तो ये इसकी वजह से ये फूल जाता है. नेक्स्ट इज सेल वॉल. सो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल. सो इट इज एब्सेंट इन animal cell. Cell wall is rigid, strong, thick, porous and non-living structure. It is made up of cellulose and hemicellulose. Cell wall of two adjacent cells are joined by a layer called middle lamella. So middle lamella से joined होता है. यहाँ पर देखिए primary wall, secondary wall and plasma membrane. So next, function of cell wall. So cell wall provides the definite shape to the cell, it provides strength to the cell, and it is permeable and allows entry of molecules of different size. It has characteristics of repair and regeneration. Nucleus. Next, this is the diagram of a cell. So if we will talk euchromatin, ribosomes, endoplasmic reticulum, nucleus, nuclear pore, perinuclear space, heterochromatin, nuclear chromatin, intranuclear chromatin, nuclear envelope, inner membrane and outer membrane. So nucleus is the most important cell organelle which directs and controls and its cellular activities. It is called as headquarter of the cell. And it was discovered by Robert Brown in 1831. In eukaryotes, a well-defined nucleus is present, while in prokaryotes, a well-defined nucleus is absent. Prokaryotes contain primitive nucleus and it has double-layered covering called nucleus
membrane. Nuclear membrane has pores with regular movement of material in and out of the cell. So besides nuclear membrane, nucleus also contains nucleolus and chromatin material, and the substance filled inside nucleus is nucleolus. Chromosome and chromatin material consist of DNA which stores and transmits hereditary information for the cell of the function, that is grow and reproduce. नाउ फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? तो ये कंट्रोल करती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को of the cell and regulates the cell cycle. It helps in transmission of hereditary character from the parents to offsprings. Now cytoplasm is the liquid part in which the other organelles float. Cytoplasm was discovered by Colliker in 1862. Now it is the site of both biosynthetic and catabolic pathways. It can be divided into two parts, that is cytosol. Cytosol is the aqueous soluble part, contains various fibrous protein forming cytoskeleton. Cell organelles is the living part of the cell having definite shape, structure and function bounded by the plasma membrane. Next is endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum is the network of membranes present in the cytoplasm. It was discovered by the Potter, Cloud and Phylum. So phylum, these are present in the cell except prokaryotes and mammalian एथ्रोसाइट्स. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ. तो जो स्मूथ होती है जो बनी होती है ट्यूबल से, और जो रफ होती है वो बनी होती है क्लास्टिमी और वेसिकल से, और ये हेल्प करती है स्टेरॉइड्स, लिपिड और पॉलीसेक्राइड सिंथेसिस में, और ये हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में. राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं. ये जो रफ स्ट्रक्चर होता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. एंड यहाँ पर क्या होता है? कंटेन्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस. राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बट यहाँ पे राइबोसोम्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये हेल्प करती है मेम्ब्रेन के बायोजेनेसिस में. नाउ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो इट इज मेनली ऑर्गेनेल्स व्हिच कैन मूव विद इन अ सेल, सो इट सर्व्स as a channel for the transport of material between various regions of cytoplasm and between cytoplasm and nucleus. Now it is also functions as cytoplasmic framework to provide space for some of the biochemical activities. So it forms endoskeleton of cell, और ये help करता है synthesis of fat, steroids, cholesterol etc. में. इसके अलावा smooth endoplasmic reticulum plays crucial role in detoxification of drugs and poisonous byproducts. तो जो poisons होते हैं प्रोडक्ट्स के उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज गोल्जी ऑपरेटस. तो गोल्जी ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड विथ वेसिकल arranged parallel to each other in stalks called cisternae along with some large and spherical vacuoles. So these are the vacuoles and these are cisternae. So it is single membrane bounded. It is absent in prokaryote and mammalian or RBCs and seed cells. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स क्या होता है? तो ये हेल्प करती है लिपिड फॉर्मेशन में. इसके अलावा ये हेल्प करती है मिडिल जो होती है लैमेली उसके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती है. और इसकी इट इज सेक्रेटरी इन नेचर. इट हेल्प इन मेलानिन सिंथेसिस, मेलानिन के सिंथेसिस में हेल्प करती है. और लिपिड और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और पैक्ड किए जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स. They provide the site for assembly of new membrane material. Next is mitochondria. This is the structure of mitochondria. So it is rod-shaped structure found in cytoplasm. All eukaryote cell except mammalian RBCs. These are also absent in prokaryotes. Prokaryotes में ये absent होता है mitochondria, and it was first seen by Colliker in insect cell. Now, maximum mitochondria are found in metabolically active cells. It is also called powerhouse of the cell or the storage battery. It is double membrane structure and where outer membrane has specific proteins while inner membrane is folded inside from chambers called cristae.
So यहाँ पे function अगर बात करें, it is the main function. So it produce and store energy in the form of ATP. It is the site of Krebs cycle of respiration. Now come to the ribosomes. Ribosomes looks like this, and ribosomes are the sites of protein synthesis. All structural and functional proteins or enzymes coded by nuclear DNA are synthesized upon cytoplasmic ribosomes. The DNA codes transcripted into messenger RNA molecules in the chromosomes of nucleus. Now, functions of ribosome की बात करें तो ribosomes are the main site. ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ. Now plastids, this is the structure, that is intermembrane space, thylakoid space and stroma. It is double membrane discoidal structure found only in plant cells. Besides being discolloidal of rhombic in plant cell, they occur in variable shapes like in algae, and they can be U-shaped, spiral or coiled or ribbon shaped, etc. So depending upon the type of pigment present in them, they are following three types. तो ल्यूकोप्लास्ट होता है जिसका कलर होता है white, और ये जनरली ऐसे पार्ट्स में पाया जाता है जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं. क्लोरोप्लास्ट विच इज रेड और ब्राउन, and chloroplast which is green in color, found in aerial parts of the plants, and these are found only in plant cell. This helps in the process of photosynthesis, so it is called the kitchen of the plants. Now chloroplast have following two parts. One is grana, that constitutes the lamellar system. These are found layered on top of each other, so these stalks are called grana. Each granum of the chloroplast is formed by superimposed closed compartments called thylakoids. So functions, they are the sites of light reactions of photosynthesis as they contain photosynthetic pigment, chlorophyll. So यहाँ पर each thylakoid quantisomes are present which are called photosynthetic units. Now come back to the stroma. Stroma, it is a granule transparent substance also called matrix. Grana are embedded too in it. So beside grana, they also contain lipid droplets, starch grains, ribosome, etc. And the function of stroma is key function होती है because this is the site of dark reaction of photosynthesis. Also helps in protein synthesis due to the presence of ribosome. Now vacuoles. वैक्यूल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स होते हैं इन साइटोप्लाज्म में which containing water and other substances. They are bounded in a single membrane called tonoplast. In animal cell, vacuoles are smaller in size and numerous while in plant. तो प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे साइज के होते हैं. Cells, a single large vacuole is found in which occupy 90% of the volume of the cell. तो लार्ज वॉक्यूल जो होता है वो 90% ऑफ द सेल का हो सकता है. And what is the function? It helps in maintaining osmotic process in the cell and store toxic metabolic products of plant cell. Another one is lysosome. Lysosome को एक sac-like structure which is granule containing enzymes of intercellular digestion, and they are bounded with the single membrane, and they occur in animal cell and a few plant cells. They do not have definite shape or size, and the function is phagy or digestion, and they are kind of waste disposal system. They help in digestion foreign materials and cell, and this is also called the suicidal bag during the disturbance of cellular metabolism. In case of the cell damage, lysosome burst and their enzymes are released into the cytoplasm and they digest their own cell, so they are also called suicidal bag. Next, difference between the animal and plant cell. So plant cell contains chloroplast for photosynthesis. Next, no cell wall. Have cell wall to maintain structure and rigidity, and no chloroplast. Usually do not contain lysosome and peroximose. Here contain cilia and flagella. Cells are square and rigid geometric shaped. Now cells are fluid, flexible and many shapes. Now limited movement. These are cells can move around. Now have one large central vehicle as small vehicle.
वैक्यूल। सो यहाँ पे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर बड़े वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वाज द लेसन। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। आप जल्दी से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं एक बार। So now the first question is, make a comparison to write down the way in which plant cells are different from animal cells. तो यहाँ इस तरह से मैं दो कॉलम बना रही हूँ। The cell animals and plants have the following differences. पहला डिफरेंस क्या है? Animal cells are generally small in size. Plant cells are larger than animal cell. Cell wall is absent, and here plasma membrane of plant cell is surrounded by the rigid cell wall of cellulose. Except protozoan, यानी कि euglena, no animal cell possesses plastids. Here in plant cell, plastids are present. Next, vacuoles in animal cells are many, small and temporary. And here in plant cell, most mature and plant cell have a permanent and large central sap vacuole. Animal cells have single, highly complex and prominent Golgi apparatus, and plants are the many simpler units of Golgi apparatus called uh, dictyosomes. Animal cells have centrosome and centrioles. Plant cells lack centrosomes and centrioles. Question number 2 is, how is a prokaryotic cell different from the eukaryotic cell? So, here the answer is, prokaryotic cell generally small in size and it is generally large in size. Eukaryotic are generally large in size. Nuclear region is called nucleoid, and it is not surrounded by a nuclear membrane. A nuclear material is surrounded by a nuclear membrane. Only a single chromosome is present and more than one chromosome is present. Nucleolus is absent, nucleolus is present. Membrane bound cell organelles are absent. Here membrane bound cells are cell organelles. सेल डिवीजन बाय फिजन बड़ी यहाँ पे माइटोसिस नहीं होता, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन और म्यूटिक डिवीजन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसा कि हम जानते हैं, जो मेंटेन करती है सेल की जो कवरिंग है, जो होमोस्टैटिस है, उसको मेंटेन करती है. सो कांस्टेंट इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल, it ruptures or breaks down, the constant internal chemical composition of the cell will be lost and it will not be able to perform its basic function, such as cell with ruptured plasma membrane is killed. Question number 4 है, what would happen of the life of a cell if there is no Golgi apparatus. So Golgi apparatus अगर नहीं है तो क्या होगा? The material synthesized in एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हों, ये जो सिंथेसाइज होंगे वो स्टोर नहीं किए जाएंगे. अगर गोल्गी ऑपरेटस में नहीं होगा, देन stored, modified and packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. So packs, products and in vesicle and secretory vesicles. In some cases, complex sugars, cellulose may be made from simple sugar in Golgi apparatus. So the Golgi apparatus is also involved in the formation of cells, which will not possible if the Golgi apparatus is not there. Now, question number 5. Which organelle is known as the powerhouse of the cell and why? So mitochondria are known as the powerhouse of the cell because they contain enzymes that are needed for stepwise oxidation of foodstuffs, carbohydrates, fats and lipids. So present in cell of CO2 and water, oxidation of food release energy which is used to form high energy ATP. That is ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा. यहाँ पर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. So energy stored in ATP is used to bring about the energy requiring activities of the cell, such as photosynthesis, protein synthesis and muscle contraction. Next is question number 6. Where do the lipids and protein consisting the cell membrane get synthesized? So, rough endoplasmic reticulum synthesize proteins constituting cell membrane. और यहाँ पे क्या है, स्मूथ endoplasmic reticulum synthesizes lipid constituting
cell membrane. Next question number 7. How does amoeba obtain its food? Amoeba has flexible cell membrane, so it enables to amoeba to engulf the food by the process called endocytosis. Last question, हमारी NCERT का, that is what is osmosis. So the diffusion of water or solvent through a semi-permeable membrane from a solution of lower concentration of solutes to a solution of higher concentration of solutes to which the membrane is relatively impermeable is called osmosis. तो ये था हमारा आज का लेसन. तो आज हमने लेसन किया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 क्लास 9 का. अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं. और ये लेसन इंपॉर्टेंट है 9th स्टैंडर्ड के लिए तो है ही, साथ में एनवीएस के टीजीटी साइंस के एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. 1 बाय 1 हम सारे लेसन को करेंगे जो टीजीटी साइंस के अंदर आता है. इसके अलावा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और भी अदर पार्ट्स रीजनिंग मैथ सबकी वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेगी अप टू आपके एनवीएस के एग्जाम होने तक. तो लगातार चैनल पे बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगती हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.